Hello students, welcome to Soria Learning. Hope you all are doing good. So, in today's session we are going to study about the taxation. So, today's topic name is taxation, students. I hope you have heard about this term in the newspapers all around you, about from your family members, from the relatives, in the news channels more frequently. So, in this chapter we are going to study that what is taxation, what is the need of taxation, and what are the types of tax. So we have many types of taxes like personal tax, corporate tax, capital gain tax, GST. So we have many taxes in India and the other countries. So on all the countries in the world we have taxes. They can have different names, but the taxes are there. So students, I would like to ask you, what are tax? What is the tax amount and why we need to pay tax to the government? So taxes are the amount that you have to pay from your income, your salary, your profits to the government. It is actually a contribution to the government so that they can run the country. So whatever, your tax is the source of income of the government, right? So whatever government is doing, whatever government is spending on your development of our country, that is from the taxes that the citizens of the country pay. So basically the development is by us, from us and for us. So that this is all about the system of the country. हम लोग ही tax pay करते हैं, then हमारे लिए ही वो taxes development of the country पे spend किए जाते हैं. Okay, so students, you must have had a trip and you have to pay the toll taxes. So what is the toll tax? That is, the government has spent on the construction of the national highways, expressways and highways, and then you are using that service, then you have to pay the toll tax. This is the system. You are using the government service, then you have to pay this taxes, or you have to pay the taxes so that government can avail you the various facilities. Right. So this is the importance and the need of taxes. Next comes the type of taxes, and first most is your personal tax. So as the name is suggesting, personal means the tax that you are paying as an individual. Whatever you are earning, that from that you have to pay the tax to the government, and personal means as an individual what you are paying, you have to pay the tax. Right students? Okay, so I would like to ask you, what are the financial sources of an individual? Tell me, आप लोग किस तरह से आपकी income, आपके profits आ सकते हैं? What is the source of the income? Financial sources क्या होते हैं किसी भी individual के? तो आप लोग कहोगे salary, wages, profits from the business, and there are many other sources. Now I am going to talk about all the sources of an individual one by one. Okay. सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स इनकम. इनकम अगेन आर ऑफ टू टाइप्स, अर्नड एंड अनअर्नड. अर्नड मीन्स जो हमने अपने खुद मेहनत से, वी आर अर्निंग दैट इनकम, वी आर डूइंग समथिंग फॉर टू अर्न दैट इनकम, दैट इज योर अर्नड इनकम. And unearned income means what I'm not doing, actually I'm not hard working for that particular thing, and I am still earning, still I am having some income from that source. Okay, so I'll now give you the examples. Earned incomes are wages and salaries. If labor, daily wages, you have heard, if a labor or any other person is working on daily wages, that the employer will pay him or her on the daily basis, then it is a wages, and if it is on the monthly basis, then we call it as a salary. So wages and your salary are your earned income. Now come to unearned income. Can you give me some examples? Okay, what you are returns from your investment, right? Okay, if I am saying I have an FD of 1 lakh in my bank, and every year I am getting 7,000 from that FD. I hope it is not that, I am not actually exactly telling you the interest amount according to the rates, but suppose you are getting 7,000. So this is your unearned income. So any income from your investment is your unearned income. तो अभी मैंने example दिया FD का. अब मैं एक और example देती हूँ आपको, rent.
आपने अपना कोई हाउस या शॉप रेंट पे दी हुई है एंड यू आर गेटिंग रेंटल इनकम फ्रॉम दैट एवरी मंथ, सो दैट इज अगेन योर unearned income, right? So difference between, are you getting the difference between earned and unearned? Wages and salaries for what you are working, that is your earned income, and unearned income is your investment income and rents. investment income की कोई और एग्जाम्पल दे सकते हैं स्टूडेंट्स आप? आपके पास सबके पास ऑलमोस्ट सेविंग्स अकाउंट होंगे, सेविंग्स अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है ऑन द क्वार्टरली बेसिस, सो वो इंटरेस्ट भी आपका इन्वेस्टमेंट इनकम है, दैट इज योर अनअर्न्ड इनकम. एनी अदर एग्जाम्पल? शेयर मार्केट, शेयर मार्केट में आपको डिविडेंड्स मिलते हैं, सो दैट इज अगेन योर अनअर्न्ड इनकम, right? So these are all the investment income and rents that comes under the unearned income. So first source is your income, that is either it can be the earned income or the unearned income, right? Okay, अब ये earned income तो हमारी बात हुई सैलरीड लोगों की, जॉब वाले लोगों की. What about the business? बहुत सारे लोग बिजनेस भी करते हैं, वहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? वहाँ पर सैलरी नहीं होती है, वहाँ पर प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है? सो वट एवर प्रॉफिट यू आर अर्निंग फ्रॉम योर बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप, देन इट इज योर प्रॉफिट. सो वन ऑफ दी सोर्स इज योर प्रॉफिट्स फ्रॉम द बिजनेस. अभी हमने बात की पहला सोर्स क्या था हमारा, किसी भी पर्सनल इनकम के लिए, पर्सनल टैक्स को पे करने के लिए, व्हाट इज इनकम, it can be earned and unearned. Then we have the profits from our business. Okay, next is your inherited wealth. Inherited means whatever your parents, your grandparents has passed to the offsprings, their children or grandchildren, that is the wealth you have inherited from your parents or your family. That is, you have not anything done to earn that income, you have just inherited from your parents, right? So that is again your income. अगर आपको आपके दादाजी या आपके फादर ने आपको एक प्रॉपर्टी और एनी गोल्ड और एनीथिंग दे हैव पास्ड इट ऑन टू दैट नाउ इट्स योर्स, देन इट इज योर ऑब्वियसली इनकम. अगर मेरे फादर मुझे कुछ देते हैं तो दैट इज I haven't done anything to earn that income, just my father has passed it on. So this is my inherited wealth. Okay students, so this is one of the third source of financial source of income. Next is your investment gains. Okay, now students please listen carefully, what is the difference between investment income जो अभी हम unearned income के अंदर बात कर चुके हैं, and what is the difference between investment gain. तो स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे तो आपके अनअर्न्ड इनकम में, आपके इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या क्या आता है स्टूडेंट्स? रेंट, आपके डिविडेंड्स, आपका इंटरेस्ट. बट इफ आई एम सीइंग दैट माय प्रॉपर्टी लास्ट ईयर वाज ऑफ 20 lakhs and today the value of the property is 22 lakhs, then it is not your investment income, it is your investment gain, right? So whatever the gain you are having in your investment is your investment gain, not income. So वो आपके unearned income में नहीं आएगा स्टूडेंट, वो आपके gains में आएगा. I'll give you the one more example. अगर मैंने आपको बोला कि आप शेयर्स परचेज करते हैं, तो शेयर्स के अंदर मैंने सिर्फ डिविडेंड्स का एग्जाम्पल दिया था अनअर्न्ड इनकम के अंदर, बट अगर आपकी शेयर वैल्यू इंक्रीज होती है, फॉर एग्जाम्पल आज आपका शेयर 500 का है एंड नेक्स्ट ईयर इट इज 550 रुपीज, देन दिस इज द इन्वेस्टमेंट गेन. ओके, नॉट इन्वेस्टमेंट इनकम. सो दिस इज इन्वेस्टमेंट गेन्स आर दी one more source of income. And the last source of income, can you think of any other source? आपको और कहाँ से पैसा मिल सकता है, आपकी और कहाँ से इनकम हो सकती है स्टूडेंट्स? The last source is the value of assets held. Value of assets held means anything that you are holding, any asset that you are holding and its value is increasing. There is a difference between value of assets held and investment gains. आपने इन्वेस्ट किया था शेयर मार्केट के अंदर, तो आपका जो उसमें गेन है वो वैल्यू ऑफ एसेट्स में नहीं आएगा, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट गेन. बट सपोज इफ आई एम हैविंग सम गोल्ड विद मी, राइट? सो अगर मैंने अपनी ज्वेलरी और कोई एसेट है मेरे पास जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, दैट इज माई अदर सोर्स ऑफ इनकम, राइट? सो अगर 5 years बैक माई गोल्ड वैल्यू वॉज अराउंड 30,000 per 10 gram and today it is 50,000 per gram, then it is the gain or the value has increased of my jewelry, right? So that is my value of the increase in the value of asset held. Okay, suppose you have some vintage car, then also its value can increase, but you have a normal car, then it will decrease, of course. If you have a mobile phone, any electronic
any costly electronic gadget, then its value will decrease. But you have any antique, any vintage car, any jewelry, then its value will increase. So it depends from item to item. So these basically the points I have discussed with you are the main financial resources of an individual. One is the income, either earned and unearned, then profits from the business, then your inherited wealth, investment gains, and the value of assets held. So students, this income tax जो भी इन resources से आप earn कर रहे हैं, आप you are getting profit, then you pay the income tax from this amount. This income tax जो personal tax होता है, this is the main source of income for the government. आप मोस्टली जो आप गवर्नमेंट का अगर मैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करूं तो दिस इनकम टैक्स पेड बाय द सिटीजंस ऑफ द कंट्री इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट. एंड सो बोथ employed and self-employed people pay the income tax. Now, after learning these sources, we will learn about the considerations that how the government take the taxes from the citizens, how the citizens pay the taxes, how they are calculated. So it is the complete decision by the government only what to tax and how to tax. आपकी गवर्नमेंट आपसे कितना टैक्स लेती है एंड कैसे लेती है, दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, नॉट बाय द सिटीजन्स. ओके, फर्स्ट, in most of the countries it is always that the government is taxing the cash flows. दैट इज आपने जो भी आपकी कैश फ्लोज हैं, आउटफ्लो है, इनफ्लो है, दैट इज ओनली कंसीडर्ड. तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ज्वेलरी है 10 लाख रुपीज़ की एंड नाउ द वैल्यू इज 15 lakhs, द गवर्नमेंट वोंट कंसीडर दैट गेन until and unless आई एम सेलिंग दैट ज्वेलरी एंड आई एम रियलाइजिंग दैट गेन. सो अगर स्टूडेंट मेरे पास कोई चीज़ रखी है एंड उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जब तक मैं उसको सेल नहीं कर देती तब तक गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लेगी, राइट. सो मेरे पास चीज़ रखी है, उसकी वैल्यू कितनी भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, इफ़ आई एम रियलाइजिंग, अभी तक मैंने वो रियलाइज तो नहीं किया ना प्रॉफिट, वो चीज़ तो उतनी ही है मेरे पास, बस वैल्यू इंक्रीज हुई है. बट जब मैं उस एसेट को, उस आइटम को सेल करूंगी और उस प्रॉफिट को रियलाइज करूंगी, देन ओनली द गवर्नमेंट विल टेक द टैक्स. सो दिस फर्स्ट मेन पॉइंट इज दैट द गवर्नमेंट ओनली टैक्स द कैश फ्लोज, राइट. ठीक है, तो टैक्स मीन्स वॉट एवर वी आर पेइंग आउट, वी आर वॉट एवर पेइंग इन. सो जब भी आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, आप लोग टैक्स पे करने जाते हैं या अपने सीए के पास जाते हैं टैक्स के लिए, सो व्हाट दे आस्क फॉर, दे आस्क फॉर योर बैंक स्टेटमेंट, बिकॉज स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस, व्हाट टू whom you are paying, how much you are paying, and how much you are receiving, and what amount you are receiving. So that is all recorded in your bank statements. So all you need to submit your bank statements to your chartered accountant to calculate the appropriate tax according to the slabs. So this means that आपके कोई और कहीं भी कोई और रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, आपको सिर्फ अपनी ट्रांजेक्शन्स को शो करना है. तो गवर्नमेंट ओनली कंसिडर्स द कैश फ्लोज व्हाइल कैलकुलेटिंग द taxes. Okay, so until and unless you realize any profit, government won't tax your assets, value of the assets held. Okay, hence in other words, in other easy words, we can say that it is easier to tax the income, not wealth. आप wealth को tax करना बहुत मुश्किल है, because how many assets, properties the person is having, until and unless he or she realizes that profit. So income means whatever transaction, whatever cash flow, inflow and outflow is going on, then it is easier to tax those cash flows and income, not wealth. So what happens, they just consider the cash flows and the transactions and the income, not the wealth of an individual, right. Okay, next consideration, that next point is government almost takes the taxes in arrears. What do you mean by the word arrear, students? Arrear means at the end of the financial year, right. So आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि आप लोग बिजनेस करते हैं, उसके बाद आप जो भी उस बिजनेस में उस फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स? From 1st April to 31st March. So in India, the duration, the timings of the financial year are 1st April to 31st March. So उस financial year में whatever you have earned from your business, then you have to pay the taxes to the government later. Arrear means you earn in the complete year, then हम tax लेंगे. So why this system is there from the government? Because
गवर्नमेंट क्या चाहती है कि आप पहले अर्न कर लीजिए, अपनी एसेंशियल बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर। ऐसा नहीं है कि आपके पास इनकम आई और पहले आपको टैक्स पे करना है, तो दैट मीन्स यू आर अनएबल टू फुलफिल योर बेसिक नीड्स। तो वट एवर योर बेसिक एंड एसेंशियल नीड्स, fulfill that, then whatever you retain at the end, then you can pay the taxes from that amount, right? So ऐसा नहीं है कि अपने टैक्सेस के लिए गवर्नमेंट सिटीजन्स को कह रही है कि आप पहले अर्न कीजिए और पहले ही मुझे दे दीजिए, नहीं, पहले आप अर्न कीजिए, अपनी फुलफिलमेंट्स, अपनी नीड्स कंप्लीट कीजिए, देन वॉट एवर यू आर रिटेनिंग, देन यू हैव टू पे टू दी government. Okay, so this is meant by the taxing in arrears. But in some cases, अगर आपने देखा होगा, what have you heard about the TDS, tax deducted from the source? That means कभी कभी जो सैलरीड पीपल होते हैं, गवर्नमेंट उनकी सोर्स से ही टैक्स डिडक्ट कर लेती है, बिकॉज अगर आप सब लोग लास्ट में ही पे करेंगे तो गवर्नमेंट पूरे साल क्या करेगी? गवर्नमेंट तो आपके पैसों से ही चलती है ना. सो salaried people generally pay from the source, that is taxes deducted from their salaries, and the government operate on that amount, and business class, mostly self-employed people, pay at the end of the year. So this is how the system works, so that the government is also not having any issue or is that is there is no income for the government in the complete year, but only in the end. So this is the system that self-employed people will pay in the arrears, and these employed people will be their taxes will be deducted at source. So this is the way the system works. And the third point is that the governments ensure that the citizens are paying the taxes once. What do you mean by paying the taxes once? That is, अगर आप लोग कुछ अर्न कर रहे हैं, you have some profits, you have some incomes, and you are paying the taxes, then whatever you are left with after paying the taxes, you are going to purchase that some property or some jewelry from that income. So students, क्या हो रहा है, आपने अर्न किया और आपने उस आफ्टर टैक्स इनकम में से, जिस इनकम को आप ऑलरेडी टैक्स दे चुके, उस इनकम में से एक प्रॉपर्टी परचेज की, एंड देन आपको एक और बार टैक्स पे करना है, बिकॉज यू आर परचेजिंग द प्रॉपर्टी और व्हेन यू आर गोइंग टू सेल द प्रॉपर्टी. सो दिस इज वेरी रॉन्ग. So government ensure that you are paying the tax once. If you are using your after tax income, after tax funds to do some investment or do purchase some property or the asset, then they ensure that you are not taxed twice. So it is very important to ensure that you are taxed once. If you have your tax after tax income, then you can use it any way that you want to use. You won't be taxed again. So these are the three main points, students, that the governments seek to ensure. That one is, the governments only tax the cash flows, not your wealth. Then they tax in areas so that you can fulfill your essential and basic needs, and then whatever you are left with according to the tax slab, according to the some basic income that is exempted. आपको पता है स्टूडेंट्स कि कुछ इनकम आपकी एग्जेम्प्टेड होती है, अगर आप वहाँ तक अर्न कर रहे हैं तो आपको कुछ टैक्स पे नहीं करना है, राइट. सो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दोज requirements, after all those exemptions and your basic needs, what you are left with, then you have to pay the taxes from that. And governments ensure that you are paying tax once on a single revenue, not twice or thrice, right. So these are the main points that governments keep in their minds while taxing, while deciding on what to tax and how to tax. So after learning that what are the financial resources of an individual to pay the personal tax, and what are the main considerations taken by the government to calculate, to decide what to tax and how to tax, we will learn how to calculate the tax. Students, अगर आपको पता है मेरी ये इनकम है, मेरी ये expenditures हैं, then how would you know that how much tax you have to pay to the government, right? So now we will learn how to calculate the taxable income. Okay, अगर आप 20 lakhs का earn कर रहे हैं तो that doesn't mean that you have to pay the taxes on the complete 20 lakhs. There are some adjustments done to your income. Now, कैसे adjustments होती है students? Some income in India are tax free. अगर आपकी कोई income ऐसी है जो tax free है, then उसमें से आप deduct करेंगे. Some expenditures are also tax free. अगर आप कुछ ऐसी चीज़ पे expend कर रहे हैं, for example आप charity कर रहे हैं, donate कर रहे हैं, तो आपको वो
जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो टैक्स फ्री हैं. देन देयर आर सम अलाउंसेस इन एवरी सिस्टम. कुछ अलाउंस दिया जाता है आपको कि आपको इस अमाउंट पे टैक्स नहीं पे करना है. सो दीज आर द मेनी पॉइंट्स दैट यू हैव टू कंसिडर बिफोर कैलकुलेटिंग योर टैक्सेबल इनकम. So what can you think? What are the tax-free incomes? So students, most of the profits from your gambling in most of the countries are tax-free. So any income from the gambling is your tax-free. Most forms of social security benefits. What are those social security benefits? What benefits the government is paying to you? For example, अभी मैंने क्लास बताया था कि कैसे आफ्टर सीनियर सिटीजन्स आर गेटिंग सम अमाउंट एवरी मंथ इन देयर बैंक अकाउंट्स. So that is the benefit that you are having as a social security benefit. Then you have to pay nothing to the government on this type of benefit. We have a scheme in India where widows are the country, the females whose husbands have been dead are getting some amount from the government as a social security benefit. Then you don't have to pay anything, right? So anything from any services that you are taking from the government as your government schools, government hospitals, any income or any expenditure from as your social security is your tax free income. Okay, and on the individual savings account, whatever your earnings from the individual savings account, that is tax free. Students, आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि आपके पास सेविंग्स अकाउंट होगा. सेविंग्स अकाउंट पे आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है अब आपको कभी उस पर टैक्स नहीं लगता. देयर इज अ लिमिट दैट यहाँ तक आप अगर अर्न कर रहे हो ऑन योर सेविंग्स अकाउंट दैट यू वोंट लिवाई एंड द गवर्नमेंट वोंट लिवाई एनी टैक्स ऑन दैट अमाउंट. हाँ, अगर आपकी एफडी है, पीपीएफ है, देन these are taxes, the taxes are there on these returns but not on the individual savings account. So these are the some sources of income that are tax free and the government won't levy any taxes on these types of income. Then we have tax free expenditures. After tax free income we have expenditures also, those who are tax free. तो स्टूडेंट्स, अगर आप कभी भी किसी चैरिटी या डोनेशन के लिए काम करेंगे तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है. तो अगर आपकी इनकम में से आपने 1 लाख रुपीज़ चैरिटी में डोनेट किया है, देन यू डोंट हैव टू पे द इनकम टैक्स ऑन दैट 1 लाख रुपीज़. Fine. So you have to pay your income tax on X minus 1 lakhs. Okay. Then anything that you are doing for the contribution of your pensions. आपके पास PPF account है, National Pension Scheme है, PF account है. I am talking about India. So if you are investing anything in these types of investment options, pension contributions, then these are the tax-free expenditures. So these are the examples of expenditures on which there are no taxes. Okay. Next is your income in kind. Students, आपकी इनकम सिर्फ कैश में या बैंक में ट्रांसफ़र नहीं होती. आपके पास बहुत सारे के ऐसे बेनिफिट्स होते हैं इनकम इन काइंड, वेयर इनकम हैज़ बीन और वेयर प्रॉफिट्स हैज़ बीन ट्रांसफर्ड इन काइंड. तो कभी आपने स्टूडेंट सुना होगा कि एज एन एम्प्लॉई आपको एक हॉलीडे ट्रिप मिला है, आपको एक कंपनी से कार मिली है और बहुत सारे ऐसे गिफ्ट्स और इंसेंटिव्स मिले विच आर इन काइंड नॉट इन कैश. तो व्हाट डू यू थिंक स्टूडेंट्स, क्या आपको उन इनकम इन काइंड पे भी टैक्स पे करना है? Yes. So it is all calculated under your CTC. CTC means cost to the company. कभी भी आप देखेंगे कि आपको जो इनकम कैश इन हैंड मिलता है वो आपके इक्विवेलेंट नहीं होता है CTC के. CTC is the total cost that the company is having on you and आपका टैक्स जो है वो आपके CTC पे लगता है, not your कैश इन हैंड पे. ठीक है. सो CTC की फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? कॉस्ट टू द कंपनी एंड टैक्सेस आर लिवाइड ऑन योर कॉस्ट टू द कंपनी, नॉट कैश इन योर हैंड्स. कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इनकम इन काइंड? फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी आपको मेडिकल इंश्योरेंस देती है तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम्स आर ऑल्सो कैलकुलेटेड इन योर कॉस्ट टू द कंपनी. और इफ़ यू हैव सब्सिडाइज मॉर्गेज, अगर आपको हाउसिंग लोन बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है बिकॉज यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, सो दैट इज अगेन योर कॉस्ट टू दी कंपनी. सो बहुत सारे ऐसे फ्रिज बेनिफिट्स होते हैं स्टूडेंट्स जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती है, बट दीज आर दी कॉस्ट टू द कंपनी, हेंस all these incomes in kind is are taxed. Income deducted at source. So जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स, आपके जितने भी सैलरीड पीपल है जनरली उनकी जो इनकम है वो आपके
सोर्स से डिडक्ट हो जाती है, जैसे मीन्स आपको आपकी इनकम जो है वो आफ्टर टैक्स ही मिलती है, राइट। सो योर इनकम डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आप लास्ट में आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आप अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू योर इनकम, देन इफ एनी लॉसेज आर ऑल्सो देयर, अगर आपको किसी चीज में लॉस हुआ, सपोज आपके बिजनेस में कोई लॉस है, देन योर द टैक्स दैट यू हैव पेड कैन बी ऑफसेट। तो आपका वो जो टैक्स है वो दोनों ऑफसेट हो जाएंगे। सो दिस इज how the system works, that you have some income, tax-free income, tax-free expenditures, then you have income in kind also, and investment deducted at source, income deducted at source. Then after considering all these points, we have a formula that how to calculate the taxes. ठीक है, अभी हम एक पॉइंट मिस करें स्टूडेंट्स, अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होते हैं? गवर्नमेंट कहती है कि हम आपसे, अगर आप एक्स अमाउंट का अर्न कर रहे हैं तो मैं आपसे पूरी एक्स अमाउंट पे टैक्स नहीं लूँगी। क्यों? क्योंकि हम कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट कर देते हैं कि अगर आप यहाँ तक कमा रहे हो तो हमें आपसे कोई टैक्स, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, एक एज एन इंडिविजुअल आपका इतने पर डे एक्सपेंडिचर और पर मंथ एक्सपेंडिचर है जो कि बेसिक नीड्स में इंक्लूड होता है। उससे ऊपर आपके, अगर बेसिक नीड्स से ऊपर आपकी इनकम है, देन यू हैव टू पे टू द गवर्नमेंट, अदरवाइज यू आर नो नीड टू पे टू द गवर्नमेंट। सो अलाउंसेस, this amount is allowed for the basic needs, right? You don't have, this amount is exempted, you don't have to pay any taxes on that amount. Do you know students, इंडिया में क्या exempted amount है? फर्स्ट स्लैब जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? From the last year's budget, it is up to 5 lakh. You don't have to pay anything. Then after 5 lakhs, you have to pay to 10%. Then we have different slabs like 10%. Then we have 20%, 25%, 30%. Then we have various slabs according to the slab of the income. But up to 5 lakhs, you don't have to pay nothing. Up to that exempted amount, you don't have to pay anything. And also there are some allowances for the senior citizens, for the other citizens. So आप देखेंगे कि senior citizens के लिए slabs अलग होते हैं, मतलब थोड़ा सा reduced rates होते हैं. So that is some allowances are given, more allowances are given to the senior citizen. So according to your age, according to your business, according to your salary, your taxes are calculated after considering all the above points that we have discussed. So next we will learn the formula, the proper formula to calculate the taxes and the taxable income. So now we will learn the formula, what is, how you determine the taxable income. जितनी आपकी इनकम है उसमें से taxable income कितनी है, ये अभी हम एक formula learn करेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर पे आता है आपका इनकम. इनकम अर्नड जो है आपकी वो आपकी ऐड होगी. देन उसमें आप ऐड करेंगे इनकम इन काइंड. इनकम इन काइंड, तो जितनी भी इनकम आपकी इन काइंड थी, नॉट इन कैश थी, वो आपको ऐड करेंगे. देन प्लस करेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस? ग्रॉस वर्ड जहां भी आता है स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आपने उस पर कोई टैक्स पे नहीं किया. अगर नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, दैट मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग द टैक्सेस. सो हमने पहले क्या किया, इनकम अर्नड प्लस योर इनकम इन काइंड, देन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम. नेक्स्ट इज योर, यू विल डिडक्ट योर टैक्स फ्री इनकम. जो पॉइंट्स अभी हमने ऊपर डिस्कस किए थे, दोज आर योर टैक्स फ्री इनकम. देन यू विल ऑल्सो डिडक्ट योर टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर्स एंड यू विल डिडक्ट दी एनी अलाउंस. तो अगर 5 lakhs आपका अलाउंस है, 2.5 lakhs आपका अलाउंस है, देन यू विल डिडक्ट दैट allowances also. So I am repeating the formula students. Income earned plus your income in kind plus your gross investment income less, that is minus your tax-free income minus your tax-free expenditure and minus any allowance. So this is your formula to calculate the taxable income. Okay. Now I will give you a very small example and a basic example. Suppose there is a person with the name Rahul. अगर राहुल की इनकम जो है वो 10 लाख रुपीज़ है, उसके बाद उसने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था विच इज़ 2 lakhs उसने एज ए इन्वेस्टमेंट अर्न किया है. तो उसकी इनकम कितनी होगी स्टूडेंट्स? हमने ऐड कर दिया ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इनकम में 12 lakhs. नाउ टैक्स फ्री इनकम उसका 50,000 उसका टैक्स फ्री इनकम है एंड 1 लाख उसका टैक्स फ्री एक्सपेंडिचर है जो उसने इन्वेस्ट किया था. तो दैट इज 1.5 lakhs क्या हो गया? 1.5 lakhs इज डिडक्टेड फ्रॉम इट्स टोटल इनकम. तो 12 lakhs में से अगर मैं 1.5 lakh डिडक्ट करती हूँ तो 10 lakhs 50,000
एंड देन वी हैव दी अलाउंसेस. अगर मैं 5 lakhs के अलाउंसेस लेती हूँ तो 10 lakhs 550,000 में से 5 lakhs डिडक्ट करके आई हैव 5,50,000. तो दिस 5,50,000 इज द राहुल्स टैक्सेबल इनकम. आप जो भी टैक्स स्लैब लगाएंगे वो 5,50,000 पे लगाएंगे. So this is how we calculate the taxable income. So students, अभी हमने देखा कि कैसे what is personal tax, what are the sources of personal tax, how government take the considerations by taking various decisions on taxing in areas, taxing cash flows, taxing ones. Then we have learned about what are the things that we have to consider before calculating the taxable income are tax-free expenditure, tax-free income, income in kind, tax allowances, tax slabs. So then we calculated the formula to calculate the taxable income. Thank you students. Hope now you are clear with the concept of the personal tax, and we will continue in the next sessions with the other types of taxes. Stay safe. Bye.